Let us see the next question. On 1st of January 2016, Mr. X visited Bank of India. Over there he found a notice as under. अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 25%। 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 25.66%। ये रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, तो आपको कैलकुलेशन करना है। इफ मिस्टर एक्स हैज ₹64, calculate maturity amount of the deposit if it is invested for 2 years. Third question, second question. If Mr. X has ₹64, calculate maturity amount of the deposit if it is invested for 3 years. उसके बाद हमको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, वो हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं। I want you to do answer of the first question and second question in the chat box. तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, इफ मिस्टर एक्स हैज ₹64, calculate maturity amount of the deposit if it is invested for 2 years. So we understand that, say, maturity amount is equal to investment into future value interest factor at the rate of interest for n number of years. तो 64 into 1.25 raised to 2. So 64 into 1.25 raised to 2. That comes to 1.5625. तो अगर 64 रुपीज 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे ना, तो मेच्योरिटी कितना आएगा? मेच्योरिटी आएगा 100 रुपए। Second part of the question, in that maturity amount is equal to investment into future value interest factor. इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 64 into 1 plus I raised to n. So 64 into 1.2566 raised to 3. So 64 into 1.2566 raised to 3. So 1.9842. So 64 into 1.9842. It is 126.98888. So it is 127 approximately. So we have calculated the answer like this. अगर आज हम लोग 64 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 साल के लिए, वी अंडरस्टैंड इट इज ईयर 0, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड। अगर आज हम लोग 64 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद उसका मेच्योरिटी हो जाएगा कितना? 100 रुपए का। और अगर हम लोग आज 64 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 साल के लिए, तो 3 साल के बाद उसका मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट कितना हो जाएगा? ₹127. So we understand that so the investment of ₹64 today for 2 years will have maturity of 100, and investing the same amount for 3 years will have maturity of 127. Third question, you are required to calculate forward rate for the third year. That is a question. So the third part of the question, in that we are required to make the calculation of the third year forward rate. Calculation of forward rate for third year. ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं F3. एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन. F3 का मतलब क्या वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं. सबसे पहले थोड़ा टाइमलाइन समझते हैं. ईयर 0,
first year, second year, third year, fourth year, and so on. बेसिकली फ्रेंड्स, थर्ड ईयर का फॉरवर्ड रेट और फॉरवर्ड रेट फॉर द थर्ड ईयर का मतलब ये है कि अगर सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में, आई एम सॉरी, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में थर्ड ईयर के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, उसका एंटिसिपेशन हम लोग आज कर रहे हैं. इन द ईयर जीरो वी आर एंटिसिपेटिंग, वी आर मेकिंग अ फोरकास्ट दैट से व्हाट इज द रेट at which we will get the return during third year. ऐसा हम लोग समझते हैं. I repeat my explanation. Forward rate for third year means rate of return of year 3, comma, likely to prevail at the beginning of third year for third year. Full stop. फॉरवर्ड रेट फॉर द थर्ड ईयर का मतलब ये है कि थर्ड ईयर के बिगिनिंग में थर्ड ईयर के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा, उसको थर्ड ईयर का फॉरवर्ड रेट बोला जाता है. फॉरवर्ड रेट फॉर द सेकेंड ईयर, उसका मतलब क्या है, से द रेट ऑफ रिटर्न लाइकली टू प्रिवेल एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर फॉर द सेकेंड ईयर. फर्स्ट ईयर का फॉरवर्ड रेट, उसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिटर्न विच इज लाइकली टू प्रिवेल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 फॉर द फर्स्ट ईयर. Similarly, F4, that is what you understand. And listen carefully friends, ये जो है ना, इसको spot rate for the second year ऐसा बोला जाता है, spot rate for the third year ऐसा बोला जाता है. spot rate for the second year का मतलब ये है कि अगर हम लोग डायरेक्टली 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो हमको क्या रिटर्न मिलेगा, उसको सेकेंड ईयर का स्पॉट रेट बोला जाता है. अगर हम लोग डायरेक्टली 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको जो रिटर्न मिलेगा उसको क्या बोला जाता है, स्पॉट रेट फॉर द थर्ड ईयर. स्पॉट रेट का मतलब, स्पॉट का मतलब क्या होता है, नाम, यानी कि आज अगर हम लोग 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमको एनुअली कंपाउंडेड जो रिटर्न मिलता है उसको स्पॉट रेट फॉर द सेकेंड ईयर, और आज इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 साल के लिए और ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड एनुअली कंपाउंडेड जो रिटर्न मिलता है हमको, उसको स्पॉट रेट फॉर द थर्ड ईयर बोला जाता है. चलो लेट अस आंसर द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं. लेट अस आंसर. कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट फॉर थर्ड ईयर. ब्रैकेट में लिखो F3 इन द ट्रैक डाउन. फॉरवर्ड रेट फॉर थर्ड ईयर means rate of return likely to prevail at the beginning of third year for third year investment. Full stop. With paragraph breakdown.
In this example, second year spot rate is 25%, comma, third year spot rate is 25.66 percentage. Full stop. It means 25% as a return on per annum basis, comma, for investing in 2 years, for investing for 2 years. Full stop. 25%, 25.66% per annum rate of return if today investment is made for 3 years. Full stop. Now friends, in this question, of course, we are required to make the calculation of only one answer, and that answer is calculation of the forward rate for the third year. That is a question. With whatever the working that we have done so far, I want you to tell me what must be the answer. Slightly a new question, but still I just want you to tell me that say what must be the forward rate for the third year. Friends, over here, the third year forward rate is calculated taking into account the figures that we already have. See, it is technically given a name as expectation theorem. That's if what kind of return that you're expecting at the beginning of the third year for third year investment. That is a question. Now you don't compute the same or you don't guess the same hypothetically. So you take into account the ground reality set to make this calculation. Further, understand carefully what I am going to speak. Further, say we make the calculation of this answer taking into account say the figures which are available with us with respect to the spot rate. We understand that over here, third year forward rate is calculated in this way. Whatever the maturity amount of the deposit that we have for an amount of the investment made today is reinvested for one more year, and we get the same maturity if we would have invested that amount directly for 3 years. I repeat that again. I request all of you to pay attention to that is say to understand. F3 is calculated as an amount invested today for 2 years, comma, is reinvested for one more year, comma, with that maturity amount is same, comma, if investment would have been
मेड फॉर 3 years। यानी कि हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि 64 रुपीज हमारे पास कुछ रेडीमेड वैल्यूज है, इस वजह से उसको हमने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो मेच्योरिटी क्या होगा वो हमने कैलकुलेट किया है, उसको 1 साल के लिए री इन्वेस्ट करते हैं एंड वी गेट द सेम मेच्योरिटी if 64 rupees is invested at 25.66% for 3 years। यानी अगर आज हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 साल के लिए और फिर वो अमाउंट को हम लोग 1 साल के लिए री इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल के लिए री इन्वेस्ट करने के बाद हमको सेम अमाउंट मिलता है, as if this amount is invested directly for 3 years। तो this is 100 into 1 plus F3 is 127। So we understand that it is 1 plus F3 is equal to 127 divided by 100। So F3 is 27%। ऐसा हम लोग आंसर कैलकुलेट करते हैं। So in terms of formula it is like this, everybody understand that is carefully। कैलकुलेशन ऑफ F3 उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, 1 प्लस स्पॉट फॉर द सेकेंड ईयर रेज टू 2 इंटू 1 प्लस F3 रेज टू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस स्पॉट फॉर द थर्ड ईयर रेज टू 3। देखो कैसे, बहुत ही आसान है, विच यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल लुकिंग टू दिस आंसर। देखो ये 64 और ये 64 एक दूसरे के सामने क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 1.25 रेज टू 2 है ना, वो सामने की तरफ चला जाएगा। सो 1.2566 रेज टू 3 अपॉन 1.25 रेज टू 3। तो देखो ये क्या है, 1.2566 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 1.25 raised to 2। So what will happen, it is F3 is equal to, we understand that's over here 1.2566 into 1.2566 into 1.2566। तो ये न्यूमरेटर आ गया, डिवाइडेड बाय 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25। तो हमारा ये आंसर आ गया 1.2699 minus 1। So F3 is 0.2699, that is 26.99%, या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं 27%। ऐसा करके ये थर्ड ईयर का फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट किया जाता है। ना सर व्हाई डू वी कंप्यूट द फॉरवर्ड रेट्स, वो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं। आंसर में लिखवाता हूं थोड़ी देर में, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाई डू वी कंप्यूट द फॉरवर्ड रेट्स। देखो उसका बहुत सारा रीजंस है, मैं कुछ रीजंस उसमें से आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो आज का टाइम है 0 1 2 3 4। सपोज कि लेट अस से दैट से मेरे को 4 साल के लिए बैंक लोन लेना है। मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर आई कैन गो फॉर द फिक्स रेट ऑफ द बोरोइंग, आइदर आई कैन गो फॉर, और आई कैन गो फॉर द फ्लोटिंग रेट ऑफ बोरोइंग। व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक द एंटिसिपेशन कि यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल समझ ही सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का स्पॉट रेट और फर्स्ट ईयर का फॉरवर्ड रेट सेम ही होता है। नाउ व्हाट हैपेंस, लेट्स से आई विल मेक एन एंटिसिपेशन कि यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है, लिसन केयरफुली, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हम लोग एंटिसिपेशन करते हैं। एंड इफ एट ऑल से वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू गो अप, देन इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, फिक्स रेट पे बोरो करेंगे। और अगर हम लोग ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाने वाला है, तो हम लोग फ्लोटिंग रेट पे बोरो करेंगे। दैट इज द वे से जब भी आपको फंड्स बोरो करना है ना, तो फिक्स या फ्लोटिंग उसका डिसीजन आप ले सकते हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग।
दूसरा, सपोज कि ऐसा है कि देयर इज अ टर्म से विच इज गिवन नेम एज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ऐसा करके एक टर्म होता है जिसमें फॉर एग्जांपल ऐसा है कि मुझे लेट अस से 2 साल के बाद 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे 2 साल के बाद 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और मुझे ये एंटिसिपेट करना है कि उस दिन उस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो उस वक्त का मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एंटिसिपेट किया उसको बोला जाता है फॉरवर्ड रेट फॉर द थर्ड ईयर। ऑपोजिट टू दैट, लिसन केयरफुली, देयर इज अ टर्म कॉल्ड फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, उसको ऐसा बोला जाता है एफआरए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन हैव अ काइंड ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो हम लोग हमारे बहुत ही सिंपल चैप्टर डेरिवेटिव में समझते हैं। हम लोग ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यही रेट ऑफ रिटर्न पे मुझे रिटर्न मिलेगा, उसको बोला जाता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। सो विद द एक्सपेक्टेशन थियरम, जो भी मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करता हूं उसके ऊपर से आई कैन टेक अ डिसीजन टुडे दैट से वेदर आई शुड एंटर इनटू द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और नॉट। दैट इज व्हाट्स द काइंड ऑफ एडवांटेज से दैट वी हैव। थर्ड, सपोज कि मुझे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही बोरो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता ही नहीं है मुझे। एट द सेम टाइम से मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये फॉरवर्ड रेट्स का कैलकुलेशन कर सकता हूं, और ऐसा मैं एंटिसिपेट कर सकता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है। अगर मैं ऐसा एंटिसिपेट कर रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू राइज, तो लिसन केयरफुली, आई कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम है कैप एग्रीमेंट। कैप एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? कैप एग्रीमेंट का मतलब ये होता है दैट से वी आर गोइंग टू हैव से अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ओटीसी डेरिवेटिव बोला जाता है। हम लोग डेरिवेटिव में ये सारा कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। मैं अभी आपको सिर्फ उसका सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशन का। हम लोग कैप एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं, एंड से विद दैट वी कैन टेक अ डिसीजन, सॉरी, कैप एग्रीमेंट में एंटर होने का हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। कैप एग्रीमेंट ऐसा एक एग्रीमेंट होता है कि जिसमें यू हैव एन ऑपोजिट पार्टी हु विल बेयर से द एक्सेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी उसमें क्या होता है दैट से यू आर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट दैट से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ रेट के ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर का इंटरेस्ट आप मुझे कंपनसेट करके दोगे, उसको कैप कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो उसका डिसीजन लेने का मुझे पता चलेगा। वैसे एक फ्लोर एग्रीमेंट होता है, एक कॉलर एग्रीमेंट होता है। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का या नहीं होने का वो हमको फॉरवर्ड रेट से पता चलता है। दिस इज द रीजन यूजिंग एक्सपेक्टेशन थियरम वी मेक द कैलकुलेशन ऑफ द फॉरवर्ड रेट। I request all of you to write down this. F3 is calculated as F3 is calculated as an amount invested today, an amount invested today for 2 years is reinvested for 1 more year. With that maturity amount is same, with that maturity amount is same, if investment would have been made for 3 years. Now write down heading calculation of F3. I request you to write down this answer as well as this answer.